ग्लोबल इकोसिस्टम बनाए हैं। ग्लोबल इकोसिस्टम, इसमें हमने ग्लोबल इकोसिस्टम के 5 टाइप्स को शो किया है, जैसे ओशन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टंड्रा इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम। जिस तरह कि हमको पता है कि हर इकोसिस्टम के अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं और अलग अलग एनिमल्स होते हैं। जैसा फॉरेस्ट के जो एनिमल्स होते हैं वो टंड्रा में नहीं रह सकते, जैसे इसका माहौल बदल होता है, इसका माहौल बदल होता है, और इस तरह डेजर्ट का भी इस टंड्रा में नहीं रह सकते। सबका अलग अलग माहौल होता है। वाटर पोल्यूशन है, उससे इंडस्ट्री के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, प्लांट्स को काटा जाता है, उस प्लांट्स को काटे जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो एनिमल्स होते हैं वो भी डेथ हो जाते हैं वहाँ पर। और जब ये आलूदगी जो इन्वायरमेंट में जाता है तो उससे ओजोन लेयर भी डिक्रीज होता है, ख़त्म होता है। ह्यूमन डाइजेशन के मुख्तलिफ पार्ट होते हैं। माउथ से वो शुरू होती है, माउथ में इसकी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है। फिर वो पहले इसके धीरे एसोफेगस में आता है। एसोफेगस जो पाथवे है इसका ज़्यादा काम नहीं होता है। एसोफेगस से फिर स्टमक में आता है, इसकी स्वीलिंग हो जाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मुख्तलिफ एसिड से इसकी डाइजेशन हो जाती है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो ये जानवर के जिस्म में दाखिल होता है और फिर जानवर तो कार्बन को रिलीज कर देता है और फिर ये इस पौधों को देता है। तो ये सारा सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। ये पौधे जानवरों को एनर्जी देता है और ये जानवर इसको कार्बन डाइऑक्साइड बुरा असर होता है और ये जानदारों के लिए बायस नुकसान बन जाता है और फिर इससे ये जानवरों के लिए बहुत नुकसान होता है इससे, और ये जानवर इससे मर जाते हैं और फिर इससे ये ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत नुकसानदेह होता है। बायोडाइवर्सिटी सर, इंसान अपने हाउसेस और फैक्ट्रीज लगाने के लिए जंगलात को काटते हैं और जिसकी वजह से जानवरों के रहने की जगह खत्म हो रही है और फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, जो मुख्तलिफ गैसेस होते हैं वो ओशन में जाते हैं और ओशन से जब एनिमल्स पानी My name is Afnan and I read it 8.0. Here I find the arrangement of elements in groups and columns. Groups and columns on the basis of their atomic number is called groups. This consists of groups and फिर हमने आधे घंटे के बाद जो इनिशियल सोल्यूशन के ऊपर जो हमने मटेरियल दिया था जिसको कलेक्ट किया और इंसान ज़्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहले हमने मॉडल लिया, इसमें पानी डाला, कैल्शियम कार्बेट डालेंगे तो जो रिएक्शन बनेगा बस वो गैस हम उसे आग लगाएंगे, वो आग स्टीम बिल्डिंग में इस्तेमाल होती है। इसके बाद कंडेंसेशन के बाद पेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसका वो डिमांड कम होता है, वो जल्दी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो कलर डालना है, जिससे वो क्या हो और फिर इसके मॉडल पे डालना है जिससे
Chemical cell and convert chemical energy into electrical energy. It consists of two half cells. One half cell is placed zinc electrode, and the other half will be placed carbon electrode. Are dipped in zinc sulfate solution. Carbon are dipped in copper sulfate solution. These two cells are connected with salt bridge. Carbon and salt bridge maintain ion between. Zinc electrode acts as anode, reaction takes place at anode. Carbon electrode acts as cathode, reaction takes place at cathode. These two electrodes are connected external wire. When we connect it over, it gives electric current. We will see. Sure. It consists of orange juice and spinach juice. And there are two types of the electrode placed in this bed. One is the copper cathode and other is the zinc plates. And the salt bridge is containing the ions between the spinach juice and citrus orange juice. And it gives us an electricity of 0.3 volts. This very small electricity, by this electric current we will do electroplating. It is a process by which a thin layer of metal is deposited over another metal, and the mass of the metal is decreased, which is to be deposited on the other metal, and it is increased in which the other metal is to be deposited. We will do the electroplating of copper. This is the copper sulfate solution in which we will do the electroplating of copper or iron. This process is to keep the metal from corrosion, prevention of corrosion. Augusting. Yes. It is electroplated. Same like. For example, water pump, pipes, bottles, सर ये वॉइस हो रहा है which are water, caustic sodium, sodium hydroxide, and aluminium foils. Sodium hydroxide, water, and aluminum foil. I have prepared a solution of caustic soda. Now I am adding these aluminium foils in this solution. The reaction will start, and I will connect the hydrogen gas in this building. Reaction is starting.
दर्द